Hello everyone. So this is the last video, third and last video of irrigation. So in this video we'll discuss about fertigation. So previously also there was a question in UPSC prelims regarding fertigation. Okay. So first let us look into that PYQ and then we can start the topic. So this is the PYQ regarding fertigation. So here they are asking about the advantages of fertigation. Okay. So what are the advantages of fertigation in agriculture? So fertigation basically means fertilizer application. So it is a synthesized word. Fertilizer is applied along with irrigation water. So irrigation plus fertilizer application. So इसको fertigation ये synthesized word है. Fertilizer application along with irrigation, right? Fertigation. So sometimes you can also apply pesticides. For example, herbicide apply कर सकते हो along with irrigation water to control the weeds. So उसको बोलते हैं herbigation. Okay. If you are applying herbicide along with irrigation water to control the weeds, it is called as herbigation. Okay, this is also a synthesized word. Now let us look at the PYQ, right? What does it say? So what are the advantages of fertigation? Controlling the alkalinity of irrigation water is possible. So you can alter the pH of irrigation water. So this is also true. You can apply acidic fertilizer if the irrigation water source जहाँ से तुम irrigation water ले रहे हो, so if the irrigation water is of higher pH, उसका pH तुम्हारा 7 से ज़्यादा है, it is 8, 8.5 or something like that. So if the pH is high, if it is alkaline, you can use acidic fertilizer. Acidic fertilizer उसमें dissolve करोगे तो pH will be lowered. So you can reduce the alkalinity of irrigation water. Soil को नहीं बोल रहे हो तुम, irrigation water जो apply कर रहे हो, if its pH is higher, you can add acidic fertilizer to bring down the pH. So yes, this can be controlled by using acidic fertilizer. Efficient application of rock phosphate and all other phosphatic fertilizers is possible. Now this is a wrong statement because phosphatic fertilizer like rock phosphate, it is less soluble in water. पानी में dissolve नहीं होता. It is not soluble in water. Acidic condition में soluble होता है वो, right? Citrate soluble है. It is not soluble in water. तो इसका solubility बहुत कम होता है. Normally phosphorus fertilizer that we use in fertigation is phosphoric acid. हम लोग liquid fertilizer use करते हैं. We use phosphoric acid, liquid fertilizer, phosphorus के case में, because solid phosphorus fertilizers are less soluble in water, so we don't use solid fertilizers like rock phosphate. It is very less soluble, citrate soluble है वो. So we use liquid fertilizer, that is phosphoric acid. So phosphorus especially जो fertilizers हैं, they are very less soluble. So rock phosphate very less soluble. So second statement is wrong. And phosphatic fertilizers, they generally precipitate. Increased availability of nutrients to the plant is possible. Yes, so drip irrigation है, you are applying fertilizer along with the drip irrigation directly near the root zone, so उनका availability बढ़ जाता है. Yes, this statement is also true. And reduction in the leaching of chemical nutrients. So you are using drip irrigation along with which you are applying nutrients, so it will be near the root zone and drop के form में तुम apply कर रहे हो. Water is applied in the form of drops through the emitter. So excess water is not given. जितना चाहिए उतना ही हम लोग देते हैं. Excess water is not given. Percolation या leaching losses नहीं होते हैं. So this is also true. So your answer is 1, 3 and 4. So first let us go through the topic, then we will again come back to this, so you will know
you will better understand the options which are given, right? So let us start the topic first. So fertigation, as I have explained earlier, fertigation का मतलब क्या है? Fertilizer application along with irrigation water. So practice of supplying the crops in the field with fertilizers via irrigation water. So irrigation water जब apply कर रहे हो तो fertilizer is dissolved in that irrigation water. So via irrigation water, through irrigation water you are applying fertilizer. So fertilizer को dissolve करके irrigation water के अंदर you are applying it directly to the plant. So irrigation plus fertilizer application is called as fertigation. So you are applying fertilizer through irrigation water, via irrigation water. So that is the meaning of fertigation. अगर तुम herbicide apply कर रहे हो तो उसको बोलेंगे herbigation. If herbicide is applied via irrigation water or through irrigation water, it is called as herbigation. Okay, so these are the two terms associated with this. Now fertigation is a modern practice. पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था, बट through micro irrigation it is possible. It provides an excellent opportunity to maximize the yield and minimize the environmental pollution. ये स्टेटमेंट का क्या मतलब है? एनवायरमेंटल पोल्यूशन. सो फर्टिलाइजर्स व्हेन यू अप्लाई दे डिसॉल्व स्लोली. इरिगेशन देते हो तो धीरे धीरे डिसॉल्व होता है, एंड ऑल ऑफ इट will not be readily available to the plant. Slowly it will be released. Sometimes when you have plenty of irrigation water or moisture is available, generally nitrogen, it is nitrate form में जल्दी available होता है, and plant may not be able to take up all of it. So some of the fertilizer that you have applied, some of the nutrients, they might be either leached, leaching losses हो सकता है, okay, or volatilization losses can happen, or through runoff the nitrogen may go along with the runoff and accumulate in a pond causing eutrophication, right? ये लीचिंग के थ्रू तुम्हारा ग्राउंड वाटर टेबल में जा सकता है, उसको कंटामिनेट कर सकता है, okay, leaching of nitrates. So all kind of losses can happen and it may cause environmental pollution. So that is why we said that through fertigation we can reduce environmental pollution, because leaching losses, runoff losses या volatilization वो सब नहीं होता है. We can increase the fertilizer use efficiency. Now what do you mean by fertilizer use efficiency? So suppose you have applied 100 kg nitrogen, all of it is, if it is used by plants and nothing is wasted, या environmental losses नहीं होता, and everything is utilized by plant, then we can say 100% fertilizer use efficiency है, if it is used by plants and for the growth and not wasted. But generally fertilizer use efficiency is normally never 100%. Some kind of loss will definitely be there. थोड़ा बहुत तो लॉस होता ही है, अगर केयरलेस हो तो बहुत ज्यादा लॉस भी हो सकता है. ओके, how much of it is actually used by plant, that is fertilizer use efficiency. So minimizing the fertilizer application, and अगर तुम फर्टिगेशन यूज करोगे तो फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी ज्यादा होगा, यानी कम फर्टिलाइजर अप्लाई करके तुमको फुल रिजल्ट मिलेगा, राइट? सपोज फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी इज ओनली 50%. सो if you want to give 50 kg of nutrients to the plant, you have to apply 100 kg. तुमको 100 kg अप्लाई करना पड़ेगा, तभी तुम्हारे प्लांट्स को 50 kg मिलेगा, बिकॉज only 50% efficiency is there. But your fertilizer use efficiency, suppose if it is high 100% hai, then you have to apply only 50 kg. Now you got it, right? So fertilizer use efficiency, if it is 100%, you have to apply directly 50 kg, because nothing is wasted. But अगर fertilizer use efficiency only 50% है, तो तुमको 100 kg अप्लाई करना पड़ेगा, so that plants will get at least 50 kg. All right, so nothing is wasted, your money is saved. Input, जो इनपुट के लिए तुम फर्टिलाइजर्स के लिए मनी स्पेंड कर रहे हो, दैट विल बी सेव्ड.
right? So losses will be reduced. So in fertigation, the timings, the amount of fertilizer, when you are applying the fertilizer, the amount of fertilizer, and the concentration of fertilizer that is applied to the plant, everything can be controlled. Okay, so fertigation is a part of precision farming. यहाँ पर तुम हर चीज को कंट्रोल कर सकते हो. Okay, so a large range of fertilizers, both solid and liquid, they are suitable for fertigation. So depend करता है. Generally, one of the most important characteristic that a fertilizer should have to be used in fertigation is solubility. तो solubility बहुत ज्यादा होना चाहिए. So solubility should be for best effect 100% solubility हो तो बेस्ट है. कुछ भी रेसिड्यू नहीं होना चाहिए. सो फर्टिलाइजर जितना ज्यादा सॉल्युबल है उतना सूटेबल है फर्टिगेशन के लिए. सो सॉल्युबिलिटी ऑफ द फर्टिलाइजर, स्पेशली सॉलिड फर्टिलाइजर्स, लिक्विड फर्टिलाइजर तो डिसॉल्व हो जाते हैं इजीली, दे कैन मिक्स इजीली विद वाटर. सॉलिड फर्टिलाइजर इज द प्रॉब्लम. सो इफ दे डोंट लीव एनी रेसिड्यू, बिकॉज दोस एमिटर्स कैन बी क्लॉग्ड. अगर कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है या फिर वो सॉलिड रेसिड्यूज बच जाते हैं, they can clog the emitter and your irrigation system can be compromised. So solubility physicochemical properties पे depend करता है, but सबसे important जो physicochemical property है for a fertilizer to be used under fertigation, that is solubility. ये बहुत important property है. So for large scale field operation, solid fertilizers are generally used because they are cheaper, okay, relatively less expensive compared to liquid formulations. Okay, so solubility of these fertilizers does vary greatly. So liquid fertilizers, they are completely soluble. Solid fertilizers जो हैं उनका solubility depend करता है. So whenever you are using solid fertilizers, the main property that you look into is solubility. So when switching to a solid fertilizer, because they are cheaper, बहुत large scale में अगर तुम कर रहे हो तो solid fertilizers are cheaper. So problem can be avoided in the nurse tanks. So nurse tanks is in which you store the fertilizer. So इस nurse tank को तुम main irrigation system के साथ attach करते हो, so that it will be mixed with the irrigation water. So nurse tank is where you store the fertilizer and you integrate that with the irrigation system. So you should add enough water so that solubility is high. So solubility is very important. Okay. Now, so मैंने बताया था, the most important thing one should look at in choosing fertilizer for fertigation is solubility, right? So सबसे important वो है. So we are looking into characteristics of fertilizers which makes them suitable. So success of fertigation depends upon primarily on the characteristics of fertilizer used. हमने बोला था physicochemical characteristics. Most important one, solubility. So fertilizer should be completely soluble. यानी तुम्हारा क्या है, 99.98% soluble होना चाहिए. यहाँ पर थोड़ा दिया हुआ है, it should be less than, so less than 0.02% insoluble material should be present. यानी 99.98% से ज्यादा solubility होना चाहिए. So whatever you add, it should be dissolved. So it should have quick dissolution in water with minimum content of conditioners. Now whenever you are applying fertilizer, solid fertilizer, for example urea का ले लो example, urea. So urea granules, when you are applying, urea has 46% nitrogen, right? 46% nitrogen. So when you are applying 100 sorry 100 kg, suppose you are applying 100 kg, उसमें सिर्फ 46 kg नाइट्रोजन है, बाकी क्या है, इसको बोलते हैं फिलर मटेरियल. सो फिलर या कंडीशनर बोलते हैं. सो जनरली फिलर मटेरियल इज कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, लाइमस्टोन हो सकता है, इट कैन बी लाइमस्टोन, इट कैन बी जिप्सम, इट कैन बी क्ले, इट बेंटोनाइट, राइट, इट कैन बी डिफरेंट मटेरियल. सो डिपेंड करता है, अलग अलग मटेरियल्स हैं फिलर मटेरियल, राइट. सो वो फिलर मटेरियल भी सॉल्युबल होना चाहिए. इफ इट इज नॉट सॉल्युबल, again it can clog the
It can clog the emitters. So minimum conditioners होने चाहिए, maximum solubility होना चाहिए, must not react with the dissolved elements in the water, especially calcium and magnesium salts. So whenever you are applying irrigation water, उस so distilled water तो नहीं होता, distilled water is when you evaporate, जो water vapor है वो जाके condense होगा तो it will be pure water. Even the mineral water that you drink, उसमें minerals add करते हैं, you cannot drink distilled water. Okay, mineral water तभी बोलते हैं उनको, right? So नॉर्मली वट एवर वाटर यू हैव, ग्राउंड वाटर तुम अगर एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो उसमें डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं, मैग्नीशियम कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं उसके अंदर. सो दीज मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट्स दे विल बी इन आयोनिक फॉर्म, राइट, दे विल बी इन आयोनिक फॉर्म. पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयंस, ये नेगेटिव आयंस भी होते हैं. सो देर आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस प्रेजेंट इन द वाटर, आयोनिक फॉर्म में होते हैं. सो वट एवर फर्टिलाइजर दैट यू आर यूजिंग, so उसके अंदर भी salts हैं, so that fertilizer will also be in ionic form in majority cases. suppose तुम्हारा अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट में अमोनियम आयन एंड सल्फेट आयन दो टाइप के हैं ना, अमोनियम एंड सल्फेट आयन दोनों है. सो अमोनियम सल्फेट सपोज यू आर यूजिंग, सो इसमें भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस है. जो इरिगेशन वाटर है उसके अंदर भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस है. सो दे शुड नॉट इंटरैक्ट एंड प्रेसिपिटेट एज सॉल्ट, बिकॉज अगर वो सॉल्ट बन जाता है तो फिर अगेन इरिगेशन वाटर के अंदर वो ड्रिपर्स को क्लॉग कर देगा, इट विल क्लॉग द drippers, again there will be a problem. So high nutrient content in the saturated solution must not easily get leached down, obviously. So fertilizer जो तुम यूज कर रहे हो, it should not be easily leached, वो soil में रहे थोड़ी देर. So it should not change the pH of water leading to precipitation or clogging. So whatever neutral fertilizers are best, but according to situation, अगर alkaline water है तो तुम acidic fertilizer यूज करके उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हो. बट अगेन इन सच सिचुएशंस देयर इज अ चांस ऑफ प्रेसिपिटेशन, एंड वो जो प्रेसिपिटेट सॉल्ट्स बनेंगे वो क्लॉग कर सकते हैं. दे should not change the pH of water leading to precipitation and clogging. should avoid corrosion of the system. तुम्हारा जो इरिगेशन सिस्टम है, पाइप्स वो सब, उसको करोड नहीं होना चाहिए, उसको खराब नहीं करना चाहिए. should be safer for field use and for mixing with other chemicals. So अगर तुम उसके साथ साथ हर्बिसाइड या फिर कुछ और केमिकल अप्लाई करना चाहते हो along with fertilizer, it should not reduce the effect of that other conditioner or other chemical, it should not react with that. So these are certain conditions that a fertilizer should fulfill to be used under fertigation. Okay, now advantages क्या है fertigation के? So it improves the efficiency of fertilizer use. So fertilizer use efficiency बताया था, यानी losses नहीं होते. Whatever fertilizer you apply, most of it will be available to the plants. So generally 60 to 80% of the recommended dose of fertilizer through water soluble form was observed to be sufficient to secure equivalent yields of the crops as obtained with 100% state fertilizers. यानी 100 kg अगर तुम नॉर्मल फर्टिलाइजर फर्टिगेशन के थ्रू नहीं, नॉर्मली अप्लाई कर रहे हो ब्रॉडकास्टिंग या अदर कोई और मेथड से, सो अगर 100 kg was used, then that would be sufficient for the normal growth. In case of fertigation, 60 to 80 kg was enough. यहाँ पर 100 kg यूज हो रहा है नॉर्मल मेथड में, फर्टिगेशन में 60 to 80 kg was enough to give the same yield. जो 100 kg दे रहा था नॉर्मल मेथड में, फर्टिगेशन में 60 to 80 kg fertilizer will be giving the same result. So fertilizer use efficiency is high. High nutrient availability to maintain soil, high nutrient availability due to maintenance of soil moisture. So drip irrigation से the soil near the plant is always kept moist. जब भी जरूरत पड़ेगी तब इमीडिएटली ड्रिप इरिगेशन स्टार्ट कर रहे हो, राइट. सो इट इज ऑलवेज केप्ट मॉइस्ट, सो न्यूट्रिएंट्स आर ऑलवेज इन dissolved state and they are readily available form. So
रेडिली अवेलेबल फॉर्म में है बिकॉज सॉइल इज ऑलवेज केप्ट मॉइस्ट. देखो मेजॉरिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स दे आर टेकन अप बाय द प्लांट अलोंग विद इरिगेशन वाटर. सो प्लांट जब पानी ले रहा होता है उसके साथ साथ चले जाते हैं. नाइट्रोजन है, सल्फर है, दे आर टेकन अलोंग विद water. When plant absorbs the water along with that solution, वो जो पानी है soil water उसके अंदर dissolved होते हैं ये. So whatever fertilizer you are applying, it will be in dissolved state in the water. So when the plant is absorbing the water, nutrients are also taken up. So fertilizer could be applied as frequently as possible and at those stages when crop requires them. So irrigation water के साथ जब उसको चाहिए nutrients तब उसको दे सकते हो. Readily you can make them available. Higher water use efficiency. So देखो irrigation प्लस फर्टिलाइजर एप्लीकेशन. इरिगेशन में तुम बेस्ट सिस्टम यूज कर रहे हो, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, एंड उसके साथ साथ फर्टिलाइजर दे रहे हो, तो दोनों सिस्टम के जो एडवांटेजेस हैं दे आर एडेड अप. वाटर application efficiency is higher, no wastage, fertilizer use efficiency is higher. Whenever you need, you can readily make the nutrients available to the plants near the root zone, so no leaching. तो ये सारे एडवांटेजेस हैं फर्टिगेशन के. So what kind of fertilizer should we use or we use under fertigation? So for applying through fertigation, what are the most suitable ones? So urea, potash and highly water soluble fertilizers are available. So nitrogen NPK में, so applying through fertigation urea and potash. See phosphorus का जो मैं बोल रहा था, phosphorus हम लोग generally phosphoric acid यूज करते हैं. solid phosphorus fertilizers are not used, they are not soluble, बहुत कम उनका solubility होता है. So urea is well suited for this system. Why? यूरिया का solubility बहुत ज्यादा है एंड यूरिया जो है ये नॉन आयोनिक फॉर्म में है. So urea is the only fertilizer that is in, ये तुम्हारा जो है ये ऑर्गेनिक फॉर्म में है एंड ये नॉन आयोनिक फॉर्म में है. Okay, that is why even higher concentrations of urea when you apply directly to the surface, 2% या 3% भी जब तुम अप्लाई करते हो तो ज़्यादा डैमेज नहीं करता है फोलियर एप्लीकेशन में भी. अदर फर्टिलाइजर्स जो आयोनिक फॉर्म में है, सॉल्ट्स हैं, उनको जब अप्लाई करोगे तो इट कैन डैमेज द foliage. So urea is well suited because of its non-ionic form, organic form में है, and its high solubility. So it is highly soluble, dissolves in non-ionic form, that does not react with the substances in the water. क्यों? अगर तुम्हारा ionic form में है fertilizer, if it is an ionic form, cation और anion, वाटर में भी तो बहुत सारे आयन्स हैं, कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, उसमें भी मैग्नीशियम आयन है, कैल्शियम आयन है, अदर आयन्स आर प्रेजेंट इन द इरिगेशन वाटर, दे बोथ कैन रिएक्ट एंड precipitate in the form of salt. So यहाँ पर यूरिया does not cause precipitation problems. The most suitable fertilizer is urea. Application of superphosphate through fertigation must be avoided as it makes precipitation of phosphate salts. So phosphorus जनरली जो हम लोग अप्लाई करते हैं लिक्विड फॉर्म में अप्लाई करते हैं. रॉक फॉस्फेट या कोई सॉलिड फर्टिलाइजर यूज नहीं करते हैं फॉस्फोरस के केस में. सो हियर फॉस्फोरिक एसिड इज जनरली मोर सुटेबल फॉर फर्टिगेशन एज इट इज अवेलेबल इन लिक्विड फॉर्म. याद रखना सॉलिड फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज नहीं करते हैं बिकॉज इट फॉर्म्स रॉक फॉस्फेट या सुपर फॉस्फेट यूज करते. रॉक फॉस्फेट तो सॉल्युबल नहीं है. सुपर फॉस्फेट जो जनरली सिंगल सुपर फॉस्फेट एसएसपी बोलते हैं हम लोग, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, ये जो है तुम्हारा प्रेसिपिटेट्स फॉर्म करते हैं. तो दीज प्रेसिपिटेट्स सॉलिड्स जो है तुम्हारे ग्रैन्यूल्स जैसे, दे कैन क्लॉग द ड्रिपर. तो और कौन से फर्टिलाइजर्स हैं जो यूज कर सकते हो? सो फर्टिलाइजर्स लाइक मोनो अमोनियम फॉस्फेट, पॉलीफीड एनपीके है जिसमें तीनों है पॉलीफीड एनपीके, ऑल द थ्री आर अवेलेबल. देन मल्टी के, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम है इसके अंदर. पोटेशियम सल्फेट, they are highly suitable for fertigation, they are soluble, more soluble. And again micronutrients can also be used because they are applied in very low concentration, easily dissolve हो जाते हैं, right? So micronutrients, they are available in salts.
so they can be suitable, they are used for fertigation. So ये एक टेबल है जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि कौन सा ज़्यादा सॉल्युबल है. सो हमने बताया था. सो फॉर एग्जांपल यू कैन सी यूरिया सॉल्युबिलिटी देखो 1.1 kg, ये ग्राम्स में दिया हुआ है, राइट, दिस इज इन ग्राम. सो 1.1 kg in 1 liter at 20 डिग्री सेल्सियस. सो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा वाटर का. सो इट डिपेंड्स, वाटर का टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. बट यू कैन सी द सॉल्युबिलिटी ऑफ यूरिया. अमोनियम नाइट्रेट ये और भी ज्यादा है. सो जस्ट टू शो यू द solubility of different fertilizers, right? बताया था solubility is one of the most important criteria. Now liquid fertilizers. So liquid fertilizers contain one or more plant nutrients including micronutrients. So जैसे बताया phosphoric acid. So raw materials used in liquid fertilizer production are mainly bulk fertilizers such as ammonium sulfate, ammonium nitrate. These are the raw material. So liquid fertilizers are also available. NPK तीनों में liquid fertilizers available हैं. So liquid fertilizers का advantage क्या है mainly? They are pure and they do not precipitate. Directly पानी में dissolve हो जाते हैं. Normally liquid fertilizers are acidic. जैसे for example phosphoric acid. Phosphoric acid is also used in cool drinks. तुम्हारा कोका कोला के बॉटल के बीच पे पीछे देखना कौन सा एसिड उसके अंदर यूज करते हैं. And they help in correcting the soil pH to some extent, also help in preventing clogging of emitters. So अगर कोई क्लॉग भी होता है तो ये एसिडिक वाटर उसको डिसॉल्व कर सकता है. सो अगर तुम्हारा इरिगेशन वाटर, सपोज इफ योर इरिगेशन वाटर इफ इट इज अल्कलाइन, इसका पीएच 7 से ज्यादा है, 7.5, 8 और समथिंग. सो सपोज 7.5 है या 8 है, राइट. इसको अगर तुम फॉस्फोरिक एसिड ऐड कर रहे हो, सपोज फॉस्फोरिक एसिड ऐड कर रहे हो, तो यू कैन ब्रिंग इट डाउन टू 7. तुम उसको अल्कलाइन, अगर तुम्हारा इरिगेशन वाटर है, इरिगेशन वाटर का अल्कलिनिटी को न्यूट्रल बना सकते हो बाय एडिंग एसिडिक फर्टिलाइजर. सो फॉर एसिडिक सॉइल्स लिक्विड फर्टिलाइजर्स विद न्यूट्रल पीएच और हायर पीएच. सो अगर एसिडिक सॉइल है, एसिडिक सॉइल का एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर रहे हो तुम, यू कैन ऐड अल्कली फर्टिलाइजर. सो अगेन तुम्हारा soil acidity can be reduced. So that can be done using liquid fertilizers. So fertilizers that are unsuitable. So कौन से fertilizers use नहीं करना चाहिए? So some fertilizers like aqueous ammonia. Aqueous ammonia उसमें volatilization losses होता है. Aqueous ammonia जो है, it is highly concentrated, highly volatile. Then it causes precipitation. ये एक प्रॉब्लम है इसके साथ. It causes precipitation, it is highly volatile, so it cannot be used. Calcium nitrate, again ये सारे जो fertilizers हैं, calcium ammonium nitrate, zinc nitrate, ferric sulfate, they form precipitation. Precipitates form करते हैं, salt form करते हैं. Precipitate का मतलब क्या है? To give you a simple example, अगर तुम दिल्ली में रहते हो, if you're using a bucket, right, या फिर तुमने अपने बाथरूम के टैप्स में देखा होगा. So after when you clean the tap, shiny बना देते हो, after 2 to 3 weeks again उसके ऊपर रफ सा होता है, रफ सा कुछ precipitate जम जाता है. या फिर bucket के अंदर देखो, it will be a salt precipitation. So salt, it will precipitate on the inner side of the bucket. Hard water है ना, hard water में salts होते हैं. So Delhi water, ground water जो है hard water है. So after some time bucket के अंदर तुमको precipitates form करेंगे. तो similar type of precipitates can form and they can clog the emitters. So these are fertilizers, they generally precipitate, so they should not be used under fertigation. They are unsuitable. Now fertilizer equipment, sorry, fertigation equipment के बारे में बात करते हैं. So जो तुम्हारा कंट्रोल यूनिट है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है, उसके अंदर तुम्हारा equipment, one additional attachment will be used so that fertilizer can also, venturi तुमको बताया था, right? So it can be attached to the main control
unit so that fertilizer can also be applied along with irrigation water. So first system is pressure differential method or bypass tank method. So it is very simple. So let me draw a diagram so that you can understand. So suppose ये तुम्हारा irrigation line है, main line. This is the main irrigation line. So here you will have a bypass system. Here you have your fertilizer nurse tank. फॉर एग्जाम्पल मैं एक हाइपोथेटिकल थोड़ा डायग्राम बना रहा हूँ, हाइपोथेटिकल डायग्राम है. ये नर्स टैंक है, इरिगेशन लाइन है. सो वाटर is flowing in this irrigation line. So water will be allowed, या बीच में तुम्हारे कंट्रोल वॉल्व्स हैं. So water will move through this सब लाइन, साइड लाइन में जाएगा. इसके अंदर तुम्हारा फर्टिलाइजर है. So it will dissolve the fertilizer and the water from here will again join the main line. So अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन वाटर दोनों है. ओके, सो नाउ यू अंडरस्टैंड. मेन लाइन है, वहां से थोड़ा सा पानी डाइवर्ट होगा. इट विल गो इनटू द फर्टिलाइजर नर्स टैंक. सो इट विल डिसॉल्व द फर्टिलाइजर एंड थोड़ा थोड़ा करके डिसॉल्व करके ये अगेन ज्वाइन कर लेगा मेन लाइन को. ओके, सो अब इसको वर्ड्स में देख लेते हैं. सो इन दिस सिस्टम सॉलिड फर्टिलाइजर सॉल्युबल इन वाटर एंड लिक्विड फर्टिलाइजर्स कैन बी इंजेक्टेड इनटू द सिस्टम. दोनों सॉलिड एंड लिक्विड दोनों फर्टिलाइजर यूज कर सकते हो. So tank containing fertilizer solution is connected to the irrigation pipe at the supply point. So तुम्हारा nurse tank है जिसके अंदर fertilizer है, it is connected to the main pipe. So a small part of the irrigation water is diverted through the tank, diluting the nutrient solution and returning to the main pipe. थोड़ा सा पानी जाएगा, डिसॉल्व करेगा और मेन पाइप को ज्वाइन कर लेगा. ओके, धीरे धीरे तुम्हारा जो फर्टिलाइजर है वो डिसॉल्व होकर ऐड होता रहेगा. सो इट विल फिनिश आफ्टर सम टाइम. स्लोली ऑल द फर्टिलाइजर विल बी डिसॉल्व्ड एंड अप्लाइड. सो टैंक खाली हो जाएगा थोड़ी देर के. सो दिस इज द बाईपास टैंक मेथड. तो ये देखने में ऐसा लगता है. सो मेन इरिगेशन पाइप के साथ ये तुम्हारा टैंक ऐड कर दिया, तुम्हारा नर्स टैंक है. ठीक है. नाउ वेंचुरी और वैक्यूम पंप. नाउ ये जो वेंचुरी एंड और वैक्यूम पंप है, इट इज बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम. सो बर्नौलीज थ्योरम अगर तुमको जो जनरली स्कूल में एग्जांपल बताते हैं, सो वेयर वेलोसिटी इज हायर प्रेशर इज लो. सो जनरली द एग्जांपल्स गिवन इन द टेक्स्ट बुक आर व्हेन यू आर standing on a railway platform. So when the train passes just in front of you, तुम्हारे सामने से ट्रेन स्पीड से जा रहा है. So because the velocity is higher, pressure in front of you will be lower and behind you the pressure will be higher. So higher pressure पीछे है, low pressure सामने है, because velocity is very high in front of you ना, ट्रेन बहुत स्पीड से गया है. So you will feel a pulling effect towards the train because in front there is low pressure, behind you there is high pressure. So you will have a pushing effect and pulling effect towards the train. ये वाला एग्जांपल दिया होगा. या फिर एरोप्लेन वाला लिफ्ट ऑफ, जगह कैसे लिफ्ट ऑफ होता है, राइट. और तुमको वो हट वाला एग्जांपल होगा ना, एक झोपड़ी है, हट वाला एग्जांपल भी देते हैं जनरली. सपोज देयर इज ए हट. सो वेरी हाई स्पीड विंड इज ब्लोइंग. सो बहुत हाई स्पीड विंड ब्लो कर रहा है. सो व्हेन देयर इज सच कंडीशन, वेलोसिटी इज वेरी हाई ऑन द टॉप. वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो यहां पर प्रेशर कम होगा. प्रेशर विल बी वेरी लो एट द टॉप. बॉटम, अगर तुम्हारा हट बंद है, इफ इट इज लॉक्ड, देयर विंडोज एंड डोर्स आर क्लोज्ड, सो wind is blowing from the top, so pressure will be low at the top because high velocity is there. Pressure will be very high inside
क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी कम है। सो झोपड़ी का जो तुम्हारा ऊपर जो टैचिंग है ना, इट विल बी रिमूव्ड, वो तुम्हारा झोपड़ी का छत है वो उड़ जाएगा। तो ये भी, सो ये एग्जांपल्स हमको बर्नौलीज थ्योरम के उसमें दिया होगा, राइट। नाउ सेम प्रिंसिपल यहां पर यूज हो रहा है। नाउ हाउ, सो यू सी this is the main water flow, main irrigation pipe है। so you will allow the water to move into the side pipe। तो एक ये तुमको यहाँ पर सिस्टम देख रहे हो, तो ये मेन पाइप है, दिस इज द मेन पाइप। ये एडिशनल, ये वेंचुरी सिस्टम है, दिस सिस्टम। ऑलराइट, सो दिस इज द वेंचुरी सिस्टम। तो ये जो है वेंचुरी सिस्टम, इसकी बात कर रहा है। सो हियर यू कैन सी वेंचुरी इंजेक्टर, ये वाला पार्ट को ध्यान दो, कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पार्ट, सॉरी। Right, so you see water flowing through the pipe, right? So here at the center you have reduced the diameter. So by reducing the diameter you have to maintain the same flow, right? Suppose यहाँ पे देखो diameter pipe का ज़्यादा है, allowing more volume to flow per unit time, whereas here at the center जो pipe है वो constricted है, it has been constricted, तो तुम्हारा diameter छोटा हो गया। So to maintain the flow, यहां पर जो वॉल्यूम है सेम वॉल्यूम यहां पर भी मेंटेन करना है। सो व्हेन द डायमीटर इज हायर, लार्जर वॉल्यूम विल बी फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, डायमीटर ज्यादा है। बट इन द कंस्ट्रिक्टेड एरिया, जो बीच में कंस्ट्रिक्टेड एरिया यहां पर, टू मेंटेन द सेम वॉल्यूम द वेलोसिटी शुड बी इंक्रीज। तो सेम वॉल्यूम पास होना है तो उस स्मॉलर डायमीटर से ज्यादा स्पीड से पास होना पड़ेगा, तभी वो वॉल्यूम को मेंटेन कर सकता है। सो यू सी, to maintain the volume the velocity will be higher in the constricted region। तो velocity अगर constricted region में ज्यादा है तो pressure will be low here, velocity ज्यादा है तो pressure low है। whereas in the tank, यहाँ velocity बिल्कुल, ये तो static है, so pressure will be high here, right? so ये वेंचुरी जब तुम ऐड करते हो, to maintain the volume of the flow through the constricted area, the velocity with which water will be flowing will be high। जहां वेलोसिटी ज्यादा होता है वहां पर प्रेशर कम होगा। यहाँ स्टैटिक है, बकेट यहाँ पर तुमने रखा हुआ, बकेट में, राइट, यू कैन सी हियर बकेट, यहाँ पर फर्टिलाइजर सॉल्यूशन होता है, सो इट इज स्टैटिक, द प्रेशर विल बी हाई देयर, सो फर्टिलाइजर सॉल्यूशन विल बी पंप्ड फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन। तो फर्टिलाइजर जो है यहाँ पर, इट विल बी पंप्ड बैक। सो बकेट के अंदर से ऑटोमेटिकली इट विल बी सक्ड इन, बिकॉज ऑफ हायर प्रेशर it will flow towards the low pressure, so it will be sucked in because of this constriction, क्योंकि वहां velocity बढ़ जाएगा to maintain the flow। तो सिंपल बर्नौलीज थ्योरम यूज करके, so venturi or vacuum pump, so it will suck it because of higher pressure in the bucket and lower pressure in the constricted region। तो जो भी suck करेगा fertilizer solution, it will again join the main pipe, so it will go to the field। Then third system generally जो use करते हैं fertilizer pump। So fertilizer pump is a standard component of the control head जो drip irrigation के साथ। So fertilizer solution is held in a non-pressurized tank and it can be injected into the irrigation water whenever we need and at a desired ratio। So ये तुम्हारा main irrigation, main control जो unit है उसका water flow है। So यहाँ पर तुम्हारा दो पाइप्स के थ्रू फर्टिलाइजर टैंक जो है, it is attached to the main pipe through these
पाइप्स मेन पाइप के साथ अटैच्ड है. So whenever you want, you can just inject it. You can inject fertilizer solution into the main irrigation pipe. तो वहां से हो जाएगा ड्रिप, मेन लाइन, सब मेन लाइन, laterals, and it will be applied to the plant. Now time of application, so depending upon the crop, whenever you need it. So since plant nutrients are important source for the plant growth, they act as food, right? So their application must be ensured depending upon the requirement. So crop का requirement क्या है, उसका potential yield. So high yielding varieties require more fertilizer, so depending upon the crop. Frequency of irrigation is governed by nature of crop, duration, right? Growth habit, yielding ability, also climatic condition, सब पे depend करता है, right? So whenever it is required, nutrients कब चाहिए, water. So irrigation तो regularly चाहिए, but nutrient injection is required during critical growth stages. So they can be applied depending upon the crop, depending upon the soil, depending upon the growth habit of the plant, depending upon the yield potential. So it is done daily or weekly or fortnightly, depending upon the crop and the growth habit, climatic conditions, उन सब पे depend करता है. Now disadvantages. Now what are the disadvantages? Generally fertigation में main disadvantage जो है बताया था तुमको, precipitation से clog कर सकता है, that is one thing. So let us go through the disadvantages. So uneven nutrient distribution occurs when the irrigation system is faulty. So you have to regularly maintain, check the irrigation system. अगर irrigation system में गड़बड़ है ना, drip irrigation system में गड़बड़ है, तो fertilizer application में भी गड़बड़ हो जाएगा, right? So it leads to over fertilization or leaching of the nutrients if excess water is applied या irrigation system में कोई defect है. Chemical reactions of fertilizers with calcium and magnesium or bicarbonates, calcium and magnesium ions, और बाइकार्बोनेट आयंस, कार्बोनेट आयंस या फिर कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस, इनके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट्स फॉर्म कर सकता है, प्रेसिपिटेट्स कैन फॉर्म एंड इट कैन क्लॉग द एमिटर एंड इट इज सुटेबल फॉर रेडिली सॉल्युबल, सॉल्युबिलिटी हाई होना चाहिए, जिनका सॉल्युबिलिटी कम है उसके लिए सुटेबल नहीं है. सो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स एंड सम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में प्रेसिपिटेट इन द माइक्रो इरिगेशन सिस्टम. सो सॉलिड फॉस्फोरस फर्टिलाइजर हम लोग यूज नहीं करते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट, दे आर नॉट यूज्ड. ओनली फॉस्फोरिक एसिड is used in case of phosphorus. So corrosion resistant fertigation equipment are needed, वरना corrosion भी हो सकता है in some cases. So potential chemical backflow. So अगर irrigation system में कोई defect है, so instead of applying the fertilizer to the plants, ये backflow पीछे की तरफ जा सकता है और तुम्हारा जो well है, well को contaminate कर सकता है. So you have to be sure and regular maintenance होना चाहिए तुम्हारा equipment का, otherwise the backflow can contaminate the well also. That is another issue. Now let us come back. Now after going through the fertigation topic, now I think you are able to answer this easily. So advantages of fertigation: controlling the alkalinity of irrigation water. अगर irrigation water तुम्हारा alkaline है, then you can add acidic fertilizer, जिसका phosphoric acid or some other acidic fertilizer जिसका pH कम है, to neutralize it. Yes, you can do that. The efficient application of rock phosphate and all other phosphatic, no, हम लोग रॉक फॉस्फेट या सिंगल सुपर फॉस्फेट फॉस्फोरस फर्टिलाइजर सॉलिड फॉर्म में तो अप्लाई नहीं करते, ओनली इन लिक्विड फॉर्म हम लोग अप्लाई करते हैं. ओनली सेपरेट, अगर वो एनपीके के फॉर्म में आ रहा है, एक कोई मिक्स्ड फर्टिलाइजर है, देन इट इज ओके, बट सिंगली एसएसपी ऐड नहीं करते हैं, रॉक फॉस्फेट ऐड नहीं करते हैं. सो इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि प्लांट के रूट जोन हमेशा मॉइस्ट होता है, तो इट इज रेडिली अवेलेबल. एक्सेस वाटर हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, जैसे सरफेस इरिगेशन मेथड आर नॉट यूज, यहाँ पर ड्रिप वाटर ड्रॉप्स के फॉर्म में अप्लाई हो रहा है, तो
No leaching, reduction of leaching. Fertilizer use efficiency is highest in such case. So 1, 3 and 4 is the right answer. So we have already gone through this PYQ in the beginning, right? So that was fertigation topic. Okay, so we'll meet again with another video soon. Thank you very much.